अस्सलाम वालेकुम। अब देखें, अब हम इसका जो सेक्शन ए है वो कवर कर चुका है। सेक्शन बी और सी जो है, दिस इज द मेन थ्योरेटिकल पार्ट। तो यहाँ पे सेक्शन बी में आपको यू हैव टू अटेम्प्ट 9 क्वेश्चंस। तो हम तो हर क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहाँ पे जैसे कि आप देखेंगे, यहाँ पे इनके एटॉमिक मासेस जो हैं गिवन है। तो इन्हीं एटॉमिक मासेस को मोलर मास कंसिडर करते हुए जो है आपको अपनी कैलकुलेशन करना होगी जहाँ पे भी ज़रूरत है। अच्छा, तो फर्स्ट है कि डिफाइन एनी फॉर्म। तो हम तो सारी डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। तो देखिए, हेडिंग आपको साइट पे प्रॉपर और प्रोमिनेंट होनी चाहिए। तो व्हाट इज स्टोइशियोमेट्री? स्टोइशियोमेट्री इज द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। ये वर्ड क्वांटिटेटिव जरूरी है, सिर्फ रिलेशनशिप लिखना जो काफी नहीं है। फिर इसी तरीके से अमंग द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, वो तो अंडरस्टूड है। इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, यानी केमिकल इक्वेशन का बैलेंस होना भी जरूरी है। अब इसकी जो डिटेल है वो तो हम कभी रेगुलर क्लास में जो डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये वर्ड्स यूज करना जरूरी है। अच्छा जी, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है? दीज आर द डिजिट्स और द नंबर्स। दीज आर द डिजिट्स इन अ नंबर विच शो रिलायबिलिटी। ये सबसे अहम चीज है। इन मेजरमेंट आर नॉन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो फिर मैं यही कहूंगा कि अगर आपको इसकी डिटेल देखना है तो फिर मैं चैप्टर 1 की जो वीडियो को आप लोग यू कैन वॉच वीडियो ऑफ द चैप्टर 1। Viscosity and activation energy. Viscosity is the measure of internal resistance in the flow of a liquid. आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि viscosity is the hindrance in the flow of liquid, internal hindrance। ये वर्ड जो इंटरनल है ना, ये बहुत जरूरी है, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। तो बहरहाल इसकी भी अगर डिटेल देखना है तो फिर चैप्टर 5 की वीडियो देखना होगी आपको। अब आ जाइए एक्टिवेशन एनर्जी। इट इज फ्रॉम चैप्टर 9, केमिकल काइनेटिक्स। इट इज द मिनिमम, सिर्फ अमाउंट ऑफ एनर्जी लिखना जरूरी नहीं है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एडिशनल एनर्जी। क्योंकि देखें, मॉलिक्यूल के अपने पास भी एनर्जी होती है, तो यहाँ पे वर्ड एडिशनल लिखना जरूरी है। रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट्स टू कन्वर्ट इनटू देयर प्रोडक्ट। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि देखें, इस तरह से एनर्जी प्रोफाइल ग्राफ आता है। तो अब इतनी एनर्जी तो रिएक्टेंट के पास मौजूद है। तो अब जो जितनी एनर्जी मजीद चाहिए किसी रिएक्टेंट को कैरी आउट करने के लिए, तो वो एडिशनल हो गई ना, तो इसलिए लफ्ज एडिशनल जरूरी है। इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एडिशनल एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट टू कन्वर्ट इनटू देयर प्रोडक्ट। इसकी एक और डेफिनेशन भी यूज कर सकते हैं हम कि इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एडिशनल एनर्जी विच द रिएक्टेंट मस्ट अचीव अबव देयर एवरेज काइनेटिक एनर्जी। यहाँ जो है ना, दिस इज देयर एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो इस एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा होना चाहिए फॉर देयर इफेक्टिव कोलिजन। अब इसके बाद अगर इतनी एनर्जी पे इफेक्टिव कोलिजन पॉसिबल है, इफेक्टिव कोलिजन का मतलब है एक ऐसा कोलिजन जिसके रिजल्ट के तौर पर जो है रिएक्शन वाकई भी हो। अच्छा, एवोगाड्रोस नंबर, ये भी चैप्टर 1 में है। दिस इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। बेहतर है कि आप इसे ब्रैकेट में लिख दें कि ये एटम्स, मॉलिक्यूल्स, फॉर्मूला यूनिट या आइंस भी हो सकता है, प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, इज कॉल्ड एवोगाड्रोस नंबर। और एवोगाड्रोस नंबर की न्यूमेरिकल वैल्यू को डेफिनेशन में साथ में शामिल कर दीजिए। ठीक है, तो आपका फिर आंसर कंप्लीट हो जाएगा। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट मस्ट बी सप्लाइड to a solid substance in order to convert it into its molten state while the temperature does not change। इसके लिए आप यूं समझ लीजिए, क्या ये एक ग्राफ स्टेट चेंज के लिए एनर्जी ग्राफ होता है। तो इसमें यहाँ पर जो है ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है, फ्यूजन पॉइंट कह लें आप इसे। अब ये इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक
कंटिन्यूसली एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, यानी टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तक जो इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की, दिस इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2 and 2 part 2. Okay, here you have to determine the percent yield of the L2S3 using the stoichiometry, and you are provided 125 gram aluminium, so 135 gram aluminium. So convert this aluminum into its mole, better to convert the mole, and it gives 300 gram of aluminum sulfide. So we should draw this reaction again, Al plus 3S and Al2S3. So you are provided 135 gram and it produces practically 300 gram. So first we have to calculate the theoretical yield. Theoretical yield is calculated by using the balanced chemical equation by the strategy that we have studied in stoichiometry. Okay, so first we have to convert this gram, mass in gram, into number of moles. So the number of moles of aluminum would be 135 divided by 27, and it would be 5 moles. Okay, so if you see this balanced chemical equation, then it means 2 mole aluminum produces 1 mole aluminum sulfide. So 1 mole aluminum sulfide is obtained from this 2 moles. So okay, so this is L2S3. Okay, so what about 1 mole? 1 mole aluminum produces 1 upon 2 mole aluminum sulfide, and you have 5 moles. So 5 mole will produce 1 upon 2 times 5 moles of the aluminum sulfide. So what you get, it is 2.5 mole aluminum sulfide would be obtained. Now you have to convert this mole into mass. So before this, you are to calculate MR of the L2SO3. So it would be 2 times 27, that is aluminum, plus sulfur R3, 3 times 32. So finally you will get 150. And now you are to calculate mass of L2S3. So it is 2.5 times 150. So it would be, if you use the calculator, it is 375. So 375 gram would be obtained. So theoretically, this is the theoretical yield. Theoretical yield. So what we obtain by using stoichiometry, it is the theoretical yield, while the practical yield is this, experimental or practical yield. Okay, so now use the formula for the percent yield. Percent yield is the practical yield divided by theoretical yield multiplied by 100, because this is percent. So use this one. Practical yield was 300 gram, that was given, and theoretical yield you have calculated here, 375 times 100. So now use the calculator. So what we got it here is 80%.
So we got the 80% yield. Okay, and this is the answer. Okay, this is the part 3 of the question number 2. Here we have given this reaction. This is a neutralization reaction that produces salt and water, and we are given the masses of the both the reactants. So we have to calculate the which one is the limiting reactant and which one is in excess. So first we should calculate the number of moles, and for calculating number of moles we are to calculate their MR. So MR of sodium hydroxide can be calculated by 1 sodium plus 1 oxygen plus 1 hydrogen. So it would be 14. And MR of phosphoric acid, MR of phosphoric acid would be 3 plus 31 is the relative atomic mass of phosphorus, and the relative atomic mass of oxygen is 16. So 16 fours are 64. So the final 64 plus 31, 95, 95 plus 3, 98. Okay, now we can calculate the number of moles as well. So number of moles of sodium hydroxide would be 100 divided by 40. You can calculate it. And number of moles of phosphoric acid, H3PO4, is also 100 divided by 98. So we got it 100 divided by 40, 2.5 moles. And here we got 1.02 mole. Okay, so now use the balanced chemical equation for calculating the limiting reactant. So NaOH plus H3PO4, और प्रोडक्ट बना लेंगे Na3PO4 plus water. And here from the balanced chemical equation, we can see that the 3 moles of sodium hydroxide are used for 1 mole of phosphoric acid. And we have 2.5 mole of sodium hydroxide for about 1 mole of phosphoric acid. So it looks that sodium hydroxide would be the limiting reagent. But we have to show the calculation. So 3 mole NaOH needs 1 mole H3PO4. So 2.5 mole NaOH needs 1 divided by 3 times 2.5 moles. So we need, by calculating this, 0.83 moles. So we need 0.833 moles of phosphoric acid. And we have 1.02 moles. So as we have H3PO4 in excess, because we have 1.02 moles. We have 1.02 mole in excess that than the required, and required was 0.833. So sodium hydroxide is the limiting reactant. So NaOH is the limiting reactant LR. Okay, if you see this balanced chemical equation, then it shows it's 3 moles are required for the 1 mole of sodium phosphate. So we have to determine the mass of the sodium phosphate produced. So we will start from the limiting reactant. Limiting reactant is sodium hydroxide. So 3 mole
sodium hydroxide produces 1 mole sodium phosphate. So 1 mole sodium phosphate is produced. So for 1 mole sodium hydroxide produces 1/3 mole Na3PO4 in sodium phosphate. Okay, so we have 2.5 mole, or we are provided 2.5 mole of sodium hydroxide. So accordingly, we can calculate 1/3 multiplied by 2.5. So there would be 0.833 mole sodium phosphate. Now use the calculator. So we have to convert this number of moles into mass. We need molar mass. So MR of Na3PO4 would be 3 times 23 plus 31 plus 64. 4 oxygens are there, so it is 64. And what would it be? 39, 69, 64. So it would be 164. So mass of sodium phosphate would be number of moles multiplied by its MR. And we got it to 136.6 gram. Okay, so this is your answer. Assalamu alaikum. Now this is question number 4. Question number 4 has 2 parts. In number 1, study and explain the quantum's theory. And in second part, there is a question where you are to answer any 4 with reason. So अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं. मैं तो यहाँ पे दोनों ही एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अगर आपकी जगह पे मैं मौजूद होऊंगा तो मैं, अगर यहाँ पे मुझे चारों के यानी 6 हैं, 6 में से मुझे 4 रीजन आते हैं, तो मैं यकीनन ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा, क्योंकि रीजन में फिर फुल मार्क्स मिल जाएंगे. जबकि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में समटाइम्स अगर आपने कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर दिया तो फिर आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे. तो रीजन का क्वेश्चन अगर आए तो उसे अटेम्प्ट करना चाहिए, अगर आपको रीजन आते हैं तो. सो स्टडी एंड एक्सप्लेन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. देखिए, हमेशा जो है क्वेश्चन नंबर सेंटर में जो है हमेशा लिखा जाता है, ताकि क्वेश्चन नंबर बिल्कुल वाजे हो, क्योंकि हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पेपर जो है क्वेश्चन नंबर से चेक करते हैं कॉपीज बोर्ड में. तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की हेडिंग भी वाजे हो, क्योंकि हमारे पास कोई गिवन स्पेस नहीं होती, हमें अपने आंसर को खुद ही प्रेजेंट करना होता है. अच्छा, इसके बाद अक्सर स्टूडेंट जो है ना उसका इंट्रोडक्शन लिख रहे होते हैं. तो अब जैसे कि यहाँ पे दिस इज द इंट्रो ऑफ द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, इसको लिखने की हरगिज भी आपको जरूरत नहीं है. आपको सिर्फ स्टेट एंड एक्सप्लेन करें तो स्टेट और एक्सप्लेन ही करना है. सो स्टेटमेंट यहाँ से आपका आंसर स्टार्ट होना चाहिए. सो व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी? इट इज द एनर्जी could be absorbed or emitted by the atoms in an arbitrary quantity. Arbitrary means any quantity, but only in a specified amount. लेकिन वो होगी कोई स्पेसिफाइड अमाउंट, कोई डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी, और उसको हम कहते हैं क्वांटा. द एनर्जी ऑफ अ फोटोन, ये इट इज पर्टिकुलरली फॉर लाइट. The energy of a photon emitted from a body or any source of light depends on the frequency. So this is the statement of the Planck's quantum theory. आपको ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का स्टेटमेंट लिखना है. इसकी जरूरत नहीं थी कि आप यहाँ पे जो कोई आंसर लिखते, दैट वाज नॉट नेसेसरी. लेकिन अगर आपके पास टाइम है और आपने इसको लिख दिया तो नो प्रॉब्लम, एक्स्ट्रा लिखने के कोई मार्क्स नहीं डिडक्ट होंगे. लेकिन ऐसा ना हो कि शुरू में आपने कुछ एक्स्ट्रा लिख दिया और बाद में आपके पास टाइम की जो है किल्लत हो जाए. अब आ जाइए पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम एटॉमिक क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. नंबर 1, you should remember in your mind that there are 4 postulates in your book. Atoms cannot absorb or emit energy continuously. Atoms cannot absorb or emit energy continuously. It can absorb, but not continuously. The absorption or emission of energy takes place in specified amounts called quanta, and quantum is packets of energy. Quantum is a smallest unit of radiation energy, which can exist independently. A quantum of light, a quantum of light energy is often called photon. So photon, the term photon, photon की जो term होती है वो especially light के लिए use होती है. Photon is light.
The energy of quantum is not fixed. It depends on the frequency. The amount of energy, ये number 3 को यहाँ पे ये number 4 explain कर रहा है. The amount of energy of quantum is directly proportional to the frequency of the radiation emitted or absorbed by the body. So this is the sign of proportionality. This is nu. It is read at nu, and nu represent the frequency. H is the Planck's constant, and this is called the Planck's equation. And the numerical value of Planck's constant is very small. You can see here, this is 10 raised to power minus 34. Now see, this is the second part of the question number 2-4. यानी या तो आपको प्लैंक्स क्वांटम नंबर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की एक्सप्लेनेशन लिखना थी, स्टैटिक एक्सप्लेन करना था उसको, या फिर आपको यहाँ पे रीजन देना है. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नंबर 1 रीजन वाज फ्री फॉलिंग ड्रॉप ऑफ वाटर इज स्फेरिकल. सो it is because of the cohesive forces between the surface molecules and the molecules in the interior side. It causes surface molecules to be pulled by the interior side molecules. Consequently, its surface area reduces to acquire a spherical geometry. So actually, ये चैप्टर स्टेट ऑफ मैटर 2 यानी कि लिक्विड से लिक्विड पार्ट से लिक्विड स्टेट से बिलोंग करता है. तो वहां पे हम सरफेस टेंशन का टॉपिक पढ़ चुके हैं. तो अगर हम सिंपली बात करें तो हमने ये पढ़ा था कि यहाँ पे देखें, एक तो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और दीज आर ऑल्सो अट्रैक्टेड बाय द मॉलिक्यूल्स इनसाइड द लिक्विड. तो यहाँ से ये भी इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये भी अट्रैक्ट कर रहे हैं. अच्छा, अगर कोई फ्री फॉलिंग ड्रॉप ऑफ वाटर है, तो अब वो सरफेस में तो आपस में अट्रैक्ट कर ही रहे हैं, लेकिन हर एक सरफेस के मॉलिक्यूल को इंटीरियर साइड से भी मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट कर रहे हैं. तो अल्टीमेटली उसकी जो शेप है वो स्फेरिकल हो जाएगी. सो this is the answer. It is because of the cohesive forces between the surface molecules and the molecules in the interior side. It causes surface molecules to be pulled by the interior side molecules. Consequently, its surface area reduces to acquire a spherical geometry. Now, this is the second reason, part B. Hydrogen and helium are very close to ideal behavior. You know, we have learned about that PV is equal to nRT. This is ideal gas equation, but there is no gas that follows the ideal behavior. So Van der Waals corrected this, and the corrected equation, the Van der Waals equation, is P plus A n square upon V square. V is the volume, and volume correction is V minus NB is equal to nRT. So actually, there are two important factors in this equation. One is this A, and another is this B. Actually, these two factors depends on the molecules, size of the molecules and their interaction. A is directly depends on the attraction between the molecule. Definitely, when the molecules are smaller, then their attraction would be lesser. The then the intermolecular forces would be weaker as compared to those molecules which are the larger. So hydrogen and helium are very small molecules. So these values are very small. If these values are very small, so definitely this addition with P and V would be very small. So due to the smaller values of B and A, hydrogen and helium are very close to the ideal behavior. So in proper words, you can write it as the values of B that depends on the size of the molecule, and A that depends on the intermolecular forces and size are smaller. So they are very close to the ideal behavior. अगर आप चाहें तो यहाँ पे साथ में वैन डर वाल इक्वेशन की एडिशन कर सकते हैं अपने आंसर में. इसमें कोई बुराई नहीं है, टाइम भी ज़्यादा नहीं लग रहा है. तो आप इसको V minus NB and it is nRT. जरूरी नहीं है, लेकिन आप अगर चाहें तो ये इक्वेशन साथ में लिख दीजिए अपने आंसर के साथ.
अच्छा, now this is part C of the question number 24 about the reason. The pH of the blood must be kept constant within a range for normal body functions. अब देखें, आपको मालूम है कि जो बॉडी फंक्शंस हैं वो ज़्यादातर डिपेंड करते हैं मुख्तलिफ टाइप्स की प्रोटीन्स और एंजाइम्स पर। एंजाइम्स ही प्रोटीन्स ही होते हैं, मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। तो अब उनके लिए प्रॉपर फंक्शन के लिए एक प्रॉपर पीएच की ज़रूरत होती है, दैट मस्ट बी विद इन अ रेंज। सो बिकॉज इफ द ब्लड इज टू एसिडिक और टू बेसिक, देन एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स बिकम्स अनेबल टू फंक्शन प्रॉपरली। क्योंकि जो पीएच फैक्टर है वो प्रोटीन्स की जो उनके स्पेसिफिक साइट्स होती हैं जहाँ पे हमारे बॉडी के सर्टेन मॉलिक्यूल्स बाइंड करते हैं और रिएक्शन करते हैं, या कोई रिसेप्टर है उस पर वर्क करता है, तो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो बॉडी के प्रॉपर फंक्शन के लिए ये ज़रूरी है। अच्छा, पार्ट डी इज द रबिंग विद बेकिंग सोडा ऑन द स्टंग एरिया ऑफ स्किन रिलीव्स हनी बी। हनी बी स्टिंग, हनी बी स्टिंग यानी जब आपको शहद की मक्खी या चींटी वगैरह काट लेती है, उसके लिए भी यही है कि वो तमाम एनिमल्स इंसेक्ट्स जिनके जो स्टंग है वो एसिडिक होता है, तो अगर हम बेकिंग सोडा या इस टाइप की कोई और चीज़ यूज़ करेंगे, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूना जिसे उर्दू में कहते हैं, सो इनफैक्ट हनी बी इंजेक्ट्स अ पेनफुल एंड इरिटेटिंग एसिड दैट इज फॉर्मिक एसिड into the skin. So rubbing mild base, for example baking soda or calcium hydroxide, it neutralizes the acids in the rubbed area. So in this way, after neutralization, we can release our pain or irritation. So now we will discuss the reasons for the statement E and F. Statement E is powdered marble react quickly with hydrochloric acid. You can consider the two types of pieces. One is this and one is this, but the mass is same. So when it is in powder form, it has greater surface area. So if it has a greater surface area, then there are more chances of acid to interact with these molecules. That's why the powder marble react quickly with hydrochloric acid. So as the fine powdered marble has greater surface area as compared to its chunks, chunks means the larger piece, so there is greater possibility of acid to collide with the marble particles. Consequently means natijatan, it increases the rate of reaction. Now, the statement F is doctors often advises gargling with warm salt water to relieve sore throat. So actually doctor और physicians advises gargling, लाज मतलब सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं, अब तो घर के बड़े भी ये कॉमन सा टोटका है, तो घर के बड़े भी यही बात कहते हैं। तो क्यों ये गार्गलिंग या जिसे उर्दू में कहते हैं गरगरे, गरारा जो है ना ये गलत वर्ड है उर्दू में, गरगरा सही लफ्ज़ है। तो गरगरा जो किए जाते हैं, तो इसका जो रीज़न है आपको मालूम है कि ये सॉल्यूशन के चैप्टर में है हमारे पास, वार्म और सॉल्ट वाटर का की बात हो रही है, तो डेफिनेटली इसका ताल्लुक ऑस्मोसिस से है। So in fact, the salt water contains high concentration of salt than the fluid of the throat cell. Throat cell यानी सेल्स के अंदर का जो फ्लूइड है, जैसे बायोलॉजी वाले स्टूडेंट बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड, इंट्रासेलुलर फ्लूइड। अब ये वर्ड इंट्रासेलुलर हम अपने आंसर में तो मेंशन नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास बायोलॉजी के स्टूडेंट ही नहीं होते हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स भी होते हैं, तो इसलिए हमने सिर्फ लिख दिया फ्लूइड ऑफ द थ्रोट सेल। लेकिन बायोलॉजी वाले स्टूडेंट समझ सकते हैं कि दिस इज टॉकिंग अबाउट द इंट्रासेलुलर फ्लूइड। और जो दूसरा फ्लूइड है जो हमारे थ्रोट में आएगा वो कहलाएगा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। सो दस पासिंग वार्म सॉल्टेड वाटर कॉजेज एक्सेस ऑफ फ्लूइड पास आउट ऑफ द सेल्स, यानी ये उससे सेल से कांटेक्ट में आएगा, तो यहाँ से वाटर आउटसाइड रिलीव हो जाएगा। तो डेफिनेटली जब एक्सोऑस्मोसिस होगा, सेल से बाहर की तरफ जो है वाटर रिलीज होगा, तो फिर सेल का साइज अपने नॉर्मल स्टेज में चला जाएगा, यानी वो जो उसमें स्वेलिंग हुई थी, इन्फ्लेमेशन थी, वो खत्म हो जाएगी। So in fact, the salt water contains high concentration of salt than the fluid inside the throat cell. Thus, passing water, यानी passing salted water, causes excess of fluid pass out of the cell by osmosis. Ultimately reduces the irritation and discomfort. तो असल में उसके जो मेन रीजन होता है डिस्कम्फर्ट का, उसमें से वन ऑफ द मेन रीजन इज
द स्वेलिंग और द इन्फ्लेमेशन। तो उस इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करने के लिए, यानी स्वेलिंग को ख़त्म करने के लिए गार्गल्स बेहतर होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो दूसरी ट्रीटमेंट है वो ना लें, वो भी लीजिए अगर डॉक्टर ने जो भी रिकमेंड किया है। नाउ दिस क्वेश्चन नंबर 5 comprises टू पार्ट्स, एंड यहाँ पे ये नहीं कि या ये करें या ये करें, यहाँ दोनों करना है, क्योंकि और भी ये कहीं पे भी और नहीं लिखा हुआ है। सो इन फर्स्ट कैलकुलेट द वेव नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस emitted in hydrogen atom when electron jumps from third orbit to first orbit of the hydrogen atom। एंड दूसरा ये है कि आप इसको अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू एन प्लस एल रूल। अच्छा, अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन में ये वाजे नहीं किया गया कि हाई टू लो और लो टू हाई, तो लेकिन हम ये तो जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लो टू हाई होती है, तो हम इसको लो टू हाई ही जो है इसको अरेंज करेंगे। बहरहाल अभी आगे क्वेश्चन आता है उसमें देखते हैं। सो द फर्स्ट पार्ट इज दिस। अब इसको करना क्या है, यूज द रेडबर्ग इक्वेशन। रेडबर्ग इक्वेशन क्या होती है, यही आपके पास। इसमें क्या है, 1/n1² माइनस 1/n2²। अब यहाँ पे n1 और n2 जो है फर्स्ट ऑर्बिट और सेकंड ऑर्बिट नहीं है, बल्कि जिसकी वैल्यू कम होगी वो ऑर्बिट n1 है, और जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वो ऑर्बिट n2 है। ये बात याद रख लीजिएगा। तो हमारे पास n1 1 है और n2 3 है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा। जबकि रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू जो है मेमोराइज कर लीजिए, दिया भी जाता है लेकिन नॉट श्योर कि हमेशा पेपर में दिया जाए या ना दिया जाए, तो इसको मेमोराइज कर लें चंद वैल्यूज। तो देखिए आपने रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दी, इसके बाद फॉर्मूले में 1 और 3 पुट कर दिया। अच्छा, ये जो प्लान मैंने आपको बताया ये आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, दिस इज फॉर यू। आप डायरेक्ट ये इक्वेशन लिखिएगा, फिर इक्वेशन में जो है ये वैल्यूज पुट कर दीजिए। देखिए इक्वेशन लिखना इसलिए ज़रूरी है कि वेव नंबर इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट एंड दिस कि बिलफर्ज अगर आपने यहाँ पे कोई कैलकुलेशन में गलती की तो कम से कम इसका कुछ मार्क्स तो होंगे ना, 0.5 या 1 मार्क वो तो मिलेगा आपको। अच्छा, तो आप ये देखिए कि 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और दिस इज द रिडबर्ग कांस्टेंट। जब आपने इस पार्ट को कैलकुलेट किया, देखिए ये तो एज इट इज वैल्यू आ गई ना, जो भी ये वैल्यू थी ये हमने एज इट इज यहाँ पे दोबारा लिख दी, स्टेप बढ़ा दिया है। और यहाँ पर ये जो 0.889 है वो ये इस कैलकुलेशन से है। आप चाहें तो एलसीएम लेके कैलकुलेशन कर लें या इंडिविजुअल फ्रैक्शन को यहाँ पे कर लीजिए, 1/9। यहाँ पे ये 1 ही रहेगा डेफिनेटली, तो 1 माइनस 1/9 जो भी आपके पास वैल्यू आएगी, तो आपका आंसर आएगा 0.899। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वेव नंबर आपके पास आ जाएगा 9.750338 इंटू 10⁻6 मीटर इनवर्स। ओके, सो दिस इज योर आंसर। अच्छा, अब इस क्वेश्चन 5B में, यानी 2 के पार्ट 5 के कंपोनेंट बी में आपको इनको अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू दियर एनर्जीज। और मैंने आपसे जैसा कि कहा था कि लो एनर्जी से हाई एनर्जी की तरफ ही अरेंज करेंगे हम। तो सबसे पहले तो आप इनकी n प्लस एल वैल्यू के लिए एक टेबल बना लें तो आसानी हो जाएगी। ना बनाना चाहें डायरी कर सकते हैं, आप डायरी भी कर लीजिए, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इस पे, इस टेबल के मार्क्स हैं नहीं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि आपके पास 5s, तो ये 5 रिप्रेजेंट करता है वैल्यू ऑफ n को, s रिप्रेजेंट करता है वैल्यू ऑफ l को। तो आपको मालूम होना चाहिए कि अगर s है तो एल की वैल्यू 0 होती है, पी है तो एल की वैल्यू 1 होती है, डी है तो एल की वैल्यू 2 होती है, और एफ है तो एल की वैल्यू 3 होती है। तो इसी रेफरेंस से ये शो किया गया है। तो 3D के लिए 3 + 2 5, 4 पी के लिए 4 + 1 = 5, 4 + 2 = 6, 3 + 0 = 3, 6s के लिए 6 + 0 = 6, एंड फॉर 3p इट इज 3 + 1 = 4। अच्छा, अब यहाँ पर आप नोट करें कि यहाँ पर ये आपके पास इन सब की वैल्यू 5 है, इसकी और इसकी वैल्यू 6 है। तो अब लोएस्ट और हाईएस्ट तो हमें पता चल गया है, चलें। तो यानी लोएस्ट वैल्यू क्या हो गई आपके पास, 3 द लोएस्ट, एंड 4 इज ऑन द सेकेंड नंबर, यानी 3s लोएस्ट फिर 3p आएगा, ये तो कंफर्म है। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर हम उसके बाद 5 वाली वैल्यू, तो ठीक है n प्लस एल वैल्यू 5 है, लेकिन इनमें से सबसे लोएस्ट वैल्यू किसको लेंगे। अगर अकॉर्डिंग टू हंस रूल एक से ज्यादा, सॉरी, अकॉर्डिंग टू n प्लस एल रूल, अगर जो है एक से ज्यादा
कि n प्लस एल वैल्यू सेम आती है, तो हम देखते हैं जिसकी एल वैल्यू कम है, जिसकी एन वैल्यू कम है, जिसकी एन वैल्यू कम है उसको हम पहले कंसिडर करेंगे। तो एन वैल्यू किसकी कम है? 3 की कम है। फिर उसके बाद 4 आएगा, फिर उसके बाद 5 आएगा। तो यानी अगर इस रेफरेंस से देखा जाए तो आपके पास सबसे लोएस्ट एनर्जी आ गई 3s की, फिर 3s से आ जाएगा 3p, 3p के बाद यहाँ पर 3d, 3d के बाद 4p, और 4p के बाद 5s। अच्छा, 5s के बाद क्या आएगा? अब यहाँ पे 6 में फिर दो वैल्यूज आ रही हैं, 4+2 और 6+0। तो अगेन जिसकी एन वैल्यू कम है हम उसको कंसिडर करेंगे। तो इसका मतलब है 5s के बाद आएगा 4d, और 4d के बाद आएगा 6s। तो अब इसको एक प्रॉपर वे में आप इसे लिख लीजिए। 3s is lesser than 3p, 3p is lesser than 3d, 3d is lesser than 4p, 4p is lesser than 5s, 5s is lesser than 4d, and 4d is lesser than 6s। और अगर आप यहाँ पे ये भी मेंशन कर दें कि लीस्ट और मोस्ट, यानी हैविंग द हाईएस्ट एनर्जी, हैविंग द लोएस्ट एनर्जी।